say. But I know you're going to call head and it's going to be tail. It's tail. It's tail. Zero, Warren. Congrats, Amy. Thank you. I think we'll Hooper, Lara, Marshall, Ambrose, Bishop and Courtney Walsh. And we have with us, and very welcome he is too, against a West Indies attack which is fully experienced, and as in the past has happened that they did very well. You last played here, I think it was a full house. Yes, it was. I think it was India versus Pakistan. That's the one we won. That's the one we won. Dramatic finish. The first ball coming up of the first one day. Ambrose. And he's off the mark straight away. And nice follow through. And that's what I think I was talking earlier. 4 for no wicket. It's Bishop. 4 for no wicket. Shot. Once again, beautifully turned. That should go for 4. And does. The ball just about pitching middle and leg, and Saeed Anwar positive about his batting. Made no mistake about picking it up at the In between overs, Asif, I'll talk to you about the wides and no balls, and I rather feel take it back. Ambrose to Ramesh. targeted everything well other than just being a little bit late and the ball beating him and coming through between bat and pad. This is where I think the Pakistanis will find the difference facing the New Zealanders earlier on in the series, and now once again through Ramesh off the wicket. And Ramesh Raja, although doing everything right, as I said earlier, was beaten. He put up this wide. He was right on target and made sure that he controlled the line and length. He's getting a bit carried away there. Well, I think what we were talking earlier, the Pakistani batsmen will have to adjust to the different pace that they are facing now to the one that they faced earlier on in the series against New Zealand. And I think the sooner they do it, the better, because there is a very, very large difference between the two attacks that they had faced. He knew very little about that. That's a good run. He's behind Bishop. Pitch of the ball which beat him, it was the pace, because the ball was shot, was there to be pulled, but Ramesh, as happened against Curtly Ambrose, there you saw it, he wasn't, in fact, he wasn't even for saying 10 for no wicket. Said wanting the side screen. Past him. Yes, and also you'll notice that the ball, which pitched just about off stump, leaving the batsman. That's a no ball. Not in the best. I think Asif for the no ball for the height of the infection. Once again, a very close call for Ramesh. Yes. That's a nice shot. Ramesh off the mark. And he drives. That's a magnificent shot. First loose ball, bowled by the West. It was wideish outside the off stump.
Ramiz drives again. But this time, no. Batting with much more confidence now, Ramiz. 19 for no wicket. We're in the Ramiz. A good run. It's very well run indeed. And from the first moment he played, side was batting. Turn, run for him. 4 runs. Pat on the back from Ramiz. He's on there. No ball. There it is. I think again it was the front foot one. They had come here to win. Well, I think Marshall now coming in. Nice shot. It may not go for 4. Being stopped. And they've run 3. Ramiz. shot. Just 1 run to side onward. This is good cricket by these two. Oh, and that's out. Cotton ball. He got, yes, it was in fact a very good catch because it was. He's off the mark. Good run. Well run. The change of commentators and expert. गेंद करेंगे रमीज को. वेस्ट इंडीज की टीम इन खिलाड़ी रमीज राजा इस गेंद शाहिद फजल मगर रमीज राजा लेकिन सुबह से ही जो रमीज था यूँ लग रहा था कि जैसे और दूसरे बॉलर भी उनको बीट कर रहे थे और आखिरकार हमने देखा कि इस टाइमिंग खराब को गेंद करेंगे. अच्छा गेंद पड़ के अंदर आया. मैंने पहले कहा था कि भाई सुबह से ही ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ, इसकी वजह से बैट्समैन को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है. आपका क्या ख्याल है इमरान को लंच के बाद बैटिंग करना ज़्यादा सूट नहीं करता? मैं ये समझता हूँ कि बढ़ जाए तो काफ़ी उसके उनके लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप हो सकता है. अब देखना ये है कि ये एम्पायर लेग बाय का इशारा करते हैं. नहीं, ये जावेद ने अपने बल्ले से फाइन लेग के अच्छा गेंद जावेद के बाहरी हिस्से से लगता हुआ थर्ड मैन पर 1 रन का और इजाफा.
अच्छा गेंद था मार्शल का। जाहिद फजल ने आखिरी लम्हों में से फाइन लेग की तरफ खेला, 1 रन का और। जावेद जोरदार शॉट खेलना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। खेलें और उस पर रन करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा रन जावेद मियादाद का, 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 39। 2 खिलाड़ी आउट और 11वां 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और बिशप करेंगे पाकिस्तान की इनिंग का 12वां ओवर। जावेद ने कट किया, गेंद उनके बाहरी हिस्से को लगते हुए थर्ड मैन की तरफ, 1 रन का और इजाफा। 40 रन पाकिस्तान की कामयाबी से उनको रन्स देने में कामयाब हुए। फजल सामना करेंगे बिशप का। अच्छा गेंद, जाहिद फजल उससे ऑन साइड पे खेलना चाहते थे। गेंद कवर के जानिब गई जहां पे फील्ड कर रहे हैं लारा। जी सर। ऊंचा गेंद, जाहिद फजल ने बड़े इत्मीनान से उसको डीप पॉइंट की तरफ खेला। रिचर्डसन जहाँ उनके ऊपर टेंशन क्रिएट की जाती है, अपीलें की जाती हैं, जो कि एक गलत किस्म का ट्रेंड है। तो अगर इस ट्रेंड से फील्डर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जाहिद फजल ने मिड ऑफ की जानिब खेला, मिड ऑफ काफ़ी पीछे। एम्ब्रोस ने फील्ड किया, 1 रन का और इजाफा। 4 रन जाहिद फजल के। जाहिद फजल लेग बाय का इशारा, खिजर हयात का इंफरादी। और बोल्ड हो गए जावेद। नहीं, ये हिट विकेट हो गए। हाँ, उनका फिर से हम एक्शन रिप्ले दे। ये इनका पाँव स्लिप हुआ और बिल्कुल विकेट पे लगा और हिट विकेट आउट। ये वाले खिलाड़ी जावेद मियादाद जो हिट विकेट हुए बिशप की गेंद पे, उन्होंने वाइट बॉल का इशारा खिजर हयात का। बहुत तेजी से 1 रन बनाया, काफी खतरनाक रन था ये। लेकिन सिकंदर ऐसे ही रन्स हैं जो कि वनडे क्रिकेट में बहुत ज़रूरी बन जाते हैं, और अगर ऐसी रन्स ना ली जाए। आउट होने का एक्शन रिप्ले देखिए, उनका हिट विकेट हुई, उनका पाँव विकेट पे लगा और इस तरह पाकिस्तान को ये इसमें सिकंदर अगर आपने गौर किया होगा कि विकेटों में जा लगे। 4 रन। महबूब शाह का इशारा, जाहिद फजल का इनफरादी स्कोर हो गया 57। सिकंदर जाहिद फजल को देख के खुशकिस्मती जाहिद फजल की ये गेंद अंदर आ गया। शायद परवेज उनके बल्ले से लगकर गेंद थोड़ा सा एक्चुअली जाहिद ने अपने जो माउंट थे वो बिल्कुल मूव नहीं किए, और देखें अपनी जगह पे खड़े होकर खेलने की कोशिश की, लेकिन बड़े खुशकिस्मत थे कि बॉल अगरचे अंदर आई लेकिन विकेटों के ऊपर से गुजरती हुई बैट्समैन के विकेट कीपर के पास चली गई।
आज के मैच के अंपायर खिजर हयात और महबूब शाह। सलीम मलिक के बाद आने वाले खिलाड़ी इमरान खान, सलीम यूसुफ, अकरम रज़ा, मुश्ताक, वक्कार और सलीम जाफर। वॉल्श थे फील्डर। 1 रन का और इजाफा। जाहिद फजल मलिक ने अब सामना करेंगे मार्शल का, जिन्होंने अब तक सलीम मलिक ने अब तक सिर्फ 1 रन बनाया है। वॉल्श ने फील्ड की 3rd मैन से आकर 101 विकेटें अब तक वो हासिल कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत शॉट सलीम मलिक का मिड ऑन की जानिब और 4 रन। देखें सलीम मलिक ने ये बॉल थोड़ा सा लूज़ उनको मिला तो उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, जो कि एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है कि जैसे ही बहुत अच्छा और तेज़ गेंद वॉल्श का हमर है। और क्योंकि विकेट जो है वो डबल पेस लगती है, बाज़ बॉल नीचे भी रह जाते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैनों को बड़ा मुहतात अंदाज में खेलना पड़ रहा है। और स्क्वायर लेग की जानिब खेला, 1 रन का और इजाफा। Right toe, and he was looking at the ball, which is not what one usually does, but that is lack of experience, as you said. That's a fine shot. That's the one point about that. Very big crowd, and we've got a little competition once in a while from 65 for 3 Pakistan, struggling a little. It was hit wicket. Bowlers Imran, Waqar Younis and Saleem Jafar, and 2 spinners in Akram Raza and Mushtaq. A fine shot. Chase there for Lara, 4 runs. In fact, a very good shot, because you will see that there is a slow ball from Courtney Walsh, and Saleem Malik waited for it, and then knowing that there was a fielder on the boundary line who was placed reasonably squarish, he placed the ball in between covers and that fielder on the boundary line. One more run. That's well run. So Pakistan now move on to that's 4 more. Nice shot from She had bowled the first over reasonably well. Not very. Rolled his wrist, if you notice. Saleem Malik. Single. Desmond Haynes. Driven. Two runs. One more. Saleem Malik. $77. 80. Big puzzle.
Bishop. 2 leg byes. They go for the second. That's good running. Again, well run, very good. That handsome shot from Saleem. That is great fielding. Brilliant. That's Lara, the baby of the team. That was excellent cricket. Beautiful shot, perfectly timed, brilliant fielding. Good One cricket. run off. A fine shot and good bit of fielding. Not the recommended method of using your boot, but it worked this time. Well, I think he can. An appeal for catch and he's out. In fact, Right fuzzle out. Very Well- good catch by Dujon. He gave him the charge. A wild swing. And there's Dujon taking a very fine catch indeed. Malik. Yeah, my word, he did his best to get out there. it was a typical one-day shot that he tried to play, knowing that there is no fielder. Tried to guide. Again. It's too close to him. Trying to sort of sneak that 91 for 4. 92. $94 for 4. That's going to be a wide, or should be. Well, it's a no ball, and again, I think it's not because of the bouncer or the height. It is for the No ball. So it makes no difference, no ball or wide. It's one more run and one more. Yes, in fact, he did. He managed to get on top of it and placed it quite beautifully between that extra fielder that was placed there and the third man to get 4 runs and put Pakistan to 122 overs. That's 100 of the Pakistan innings. Going to get 4 runs. Gently guided. Guided, yes. And Thick outside edge, but played deliberately. Nice shot from Imran, a neat shot from him. 104 for 4. He really ran that first run very, very quickly, Imran, but that very lucky there, and a very spectacular attempt there by shot. Puts the batsman under pressure when they're going for their shots and for their runs. single. And I think this is all they need to do, pick up their singles and Saleem Malik. One more run. Five bowlers have been used by Desmond Haynes, Bishop, Ambrose, Marshall, Walsh and Hooper, so that's his 5 main bowlers. Good sensible batting by Imran. Single, it's in there.
110 for 4. It's a close call for. Well, I think after that shot, Imran needs to go and talk to Saleem Malik. There he is. Saleem Malik living a little dangerously. Professor Shah. इत्मीनान से 1 रन इमरान का। इमरान का इनफरादी स्कोर हो गया है 10। जोरदार कट सीधा वॉल्श के बाद थर्ड मैन पर 1 रन का और। आगे निकलकर जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, सीधा गेंद मार्शल के पास, बहुत तेजी से एक बहुत अच्छा सिंगल, 1 रन के साथ हो गया 11। मलिक 32 पे बैटिंग कर रहे हैं, सामना करेंगे हुपर का। स्क्वायर लेग की जानिब खेलना चाहते थे मगर सीधा गेंद गया रिचर्डसन पर 25वां। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बैट्समैन मतलब हमारे जो बॉलर हैं वो बिल्कुल। शॉट इमरान ने पुल किया, जोरदार शॉट मिड विकेट के जानिब, 4 रन। ये बहुत ही शॉर्ट बॉल था और इमरान ने इसे पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज से इसको पुल किया है, इसको बिल्कुल सही अंदाज से उन्होंने जज किया था। परवेज में आपसे ये पूछा था कि किस किस्म का टारगेट एक अच्छा टारगेट होगा। समझता हूँ कि नो बॉल का इशारा खिजर हयात का। तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। सलीम मलिक का ड्राइव मिड ऑफ की तरफ, बिशप आए फील्ड की, थ्रो, 2 रन का और इजाफा। 26 ओवर के इख्तिताम पर पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 121, 26 ओवर के इख्तिताम पर। फुल टॉस इमरान ने ड्राइव किया, लोगी फील्डर हैं, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। इमरान का जोरदार शॉट पॉइंट की जानिब, और 2 रन का इजाफा। इमरान का मजमू इनफरादी रन लेना चाहते थे सलीम मलिक। लारा फील्डर हैं, लारा फुल टॉस, इमरान ने ड्राइव किया, सीधा गेंद लारा के पास। 27वें ओवर के इख्तिताम पर पानी के वक्फे के बाद खेल दोबारा शुरू हो रहा है। बॉलिंग में तब्दीली, यूनिवर्सिटी एंड से बॉल कराने आ रहे हैं मार्शल। वॉल्श ने कराए 6 ओवर 40 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट। 27 ओवर, अच्छा रन गली की तरफ खेला सलीम मलिक, मार्शल। इमरान ने फाइन लेग की तरफ खेला। एम्ब्रोज फील्डर हैं, 1 रन का और इजाफा। इमरान का इनफरादी स्कोर 19, पाकिस्तान का मजमूई स्कोर। बहुत तेज गेंद पीछे, सलीम मलिक के ग्लव्स पे लगता है गेंद लगी है,
वो अपने हाथ देख रहे हैं इस वक्त। बहुत ही उम्दा गेंद था, बिल्कुल गुड लेंथ से एकदम से ऊपर आया और सलीम मलिक उसको बिल्कुल समझ ना पाए, लेकिन बहुत लकी थे कि उनके हम ये एक्शन रिप्ले फिर से देखें, फर्स्ट मोमेंट पे एक्चुअली उन्होंने अपनी आंख जो थी वो बॉल से हटा ली थी, जिसकी वजह से उनको बॉल नज़र नहीं आ सका और वो समझ ना पाए कि डक करें या उसको खेलें। लेकिन चूँकि उनका बिल्कुल अपने मुंह के सामने दोनों हाथ थे, इसलिए बहुत खुशकिस्मत थे कि हाथों पे मलिक का ड्राइव मिड ऑफ की तरफ, 1 रन का और इजाफा। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक बीच में से एक आधा बॉल इस तरह के करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा 126 रन, 4 खिलाड़ी आउट। मलिक बैटिंग कर रहे हैं 36 पे, इमरान बैटिंग कर रहे हैं। मिड ऑफ की तरफ ड्राइव किया सलीम मलिक ने, 1 रन का और इजाफा। एम्ब्रोज हैं फील्डर। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 127, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जोरदार ड्राइव मगर गेंद सीधा उनकी अच्छी फील्ड। इमरान बैटिंग कर रहे हैं 19 रन पे। पाकिस्तान की इनिंग का 29वां ओवर। फुल टॉस और ये गेंद वाइड। इमरान खान ने थर्ड मैन की जानिब खेला, 1 रन का और इजाफा। फुल टॉस, सलीम मलिक उसको मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे मगर बल्ले पे ठीक तरीके से गेंद नहीं आया, उनके निचले हिस्से पे लगा। जोरदार शॉट लगाना चाहते थे मगर उनके बल्ले के बाहरी के हिस्से पे लगते हुए थर्ड मैन पे 4 रन। एक बहुत अच्छा वनडे का शॉट। इस 4 रन के साथ पाकिस्तान के मजमूई स्कोर हो गया है 132। सलीम मलिक का इनफरादी स्कोर 41। सिकंदर जिस रफ्तार से ये दोनों पाकिस्तानी बैट्समैन खेल रहे हैं, यूँ लगता है कि अगर इसी तरह खेल बाद टेल स्टार्ट हो जाती है। सो सारा दारोमदार जो है इस वक्त वो इस पेयर के ऊपर है, इमरान और सलीम मलिक। और ये देखें कितना अच्छा गेंद उसने मार्शल ने मूव किया है। इमरान पूरी तरह लाइन में नहीं आ सके थे, इसलिए बीट हो गए। 133 रन, 4 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान की इनिंग का 30वां ओवर। इमरान खान सामना कर रहे हैं मार्शल का, उनका अपना ज़ाती स्कोर है 20। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने भी, मैं समझता हूँ कि अब परवेज ये तीसरा गेंद है जो इमरान खान बीट हुए हैं मार्शल का। एक्चुअली मार्शल थोड़ा सा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं और वहाँ से बॉल को बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, आउट स्विंग कर रहे हैं, जिससे कि इमरान बीट हो रहे हैं। पाकिस्तान 133 रन, 4 खिलाड़ी आउट। इस दफ़ा गेंद इमरान खान के बल्ले के छूने में कामयाब हुई और उनका बाहरी हिस्सा लेते हुए थर्ड मैन की जानिब 1 रन का और इजाफा। मार्शल ने अब तक किए हैं 7 ओवर, उन्हें अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। उन्होंने 22 रन दिए हैं 7 ओवरों में।
बिशप 5 ओवर 1 मेड इन 26 रन, एक खिलाड़ी आउट। एम्ब्रोस 5 ओवर कोई मेड इन 12 रन, 2 खिलाड़ी आउट। मार्शल 7 ओवर 22 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। वॉल्श 6 ओवर 40 रन, हूपर 7 ओवर 27 रन, एक खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान की इनिंग का 31वां ओवर। इमरान ने मिड ऑन की जानिब खेला, 1 रन का और इजाफा। मार्शल हैं फील्डर। सलीम मलिक ने ड्राइव किया सीधा लोगी के पास, अच्छी फील्ड, अच्छा थ्रो। मलिक का इनफरादी स्कोर 42, 136। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट। ऊपर अपना जोरदार शॉट, इमरान खान का 4 रन। माफ कीजिएगा, ये छक्का है। मलिक का ड्राइव, 1 रन का और इजाफा। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 144। पाकिस्तान की इनिंग का 31वां ओवर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान खूबसूरत कट और 4 रन। बहुत ही उम्दा एक शॉट था ये। सिकंदर, ज़रा सा बॉल उनको ऑफ स्टंप के बाहर मिला हुआ था और पूरी तरह उसके ऊपर झुकते हुए इमरान ने बहुत अच्छा उसको कट की तरफ खेला और पूरे ज़ोर से बॉल। एक और रन का इजाफा। इमरान का स्कोर, इनफरादी स्कोर हो गया है 34। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 150। सिकंदर इस वक्त यकीनन सलीम मलिक जो हैं वो वनडे क्रिकेट में दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं। उन्होंने पूरी तरह वनडे क्रिकेट की टेक्निक को अपना लिया है पर हो रहे हैं। जोरदार शॉट सलीम मलिक का, सीधा डीप कवर पे। लारा के पास 1 रन का और इजाफा 32 ओवर के इख्तिताम पर। Saleem looking inquiringly at the umpire. 1 for 4. And we're in the last stretch now, 8 overs to go. And of course, the important factor is, can these 8 overs be bowled in? That's a good shot. 4 runs. I think Saleem Malik is the most difficult batsman to bowl at, especially when he's in this sort of a form, because that particular ball pitched outside off stump, fairly good length. It wasn't all that short, but Saleem made it look as if it was very short, and he placed it wide of mid-on, and there it is, managed to get 4 runs. So Malik on 49. That's a 50. Well played. Excellent. Well played. Excellent 50. Very important for Pakistan that it stays there and make sure that both him and Imran play all the remaining overs. Well, he's come off for Pakistan at just the right time. 5 fours, 61 balls in his 50. And Imran going very strong. It's a very good partnership. Very, very valuable one. Taken Pakistan out of the gloom. 157 for 4. And hitting at times, and
I think if these two can make sure of utilizing the last remaining 7 overs, every likelihood that Pakistan will settle for a single. Brilliant, magnificent fielding. Beautiful throw. Equation between runs and overs and the bottom line is the asking rate. Imran now on the attack. Plenty of support for him, plenty of cheering for him. What an amazing shot. In fact, there it is. You can see it was a creation and productivity of one-day cricket. Nothing Incredible. wrong with the ball. He's such a great one-day player. Makes room for himself for more runs. You can't say they're not enjoying themselves. This is what he's capable of. Similar delivery, but look at the in fact a better delivery than the last one. Pitched fairly up to him, well within the stumps, not giving him much room. But Saleem making there's no one that I have seen in one-day cricket. 166 now. He's claiming a catch. And he's out. Very fine catch. Well, as we have been saying, Desmond Haynes, very good catch. in fact, a great catch to get him out. But he did his job for Pakistan. He did exceptionally well to get these runs on the board. And he got out to a magnificent catch by Desmond Haynes. 58 of 65 balls with 7 falls is a very, very good striking rate. Tremendous improvisation by Saleem Malik. Well, the end of a very fine partnership. Not only an entertaining partnership, but one invaluable for Pakistan. And just one regret, there's a catch, and a very good catch by Desmond Haynes. He took it very Good low. position to see that Yes. when he played this shot. And there's Haynes, In fact, both the umpires, as you can inches off see. the ground, and he claims it. A good decision. I think it was a little bit unlucky that he hit it at the spot where Desmond was fielding. Yes. And unfortunately for him, he hung on to it. Saleem Yusuf has come in. 168 now for 5. For 6. 166 for 5. We have a little problem here. We're unsighted. That's Saleem Yusuf off the mark. It's been interesting to see whether or not they will. That point is going to produce that extra pressure on Imran because he's very conscious of that. And I think he's going to have a go. Yes, and at the same time, I don't know which way it's going to work out, whether it's going to be. Field for run out. Again, this is what Asif and I have been talking about, is the spectacular fielding of the West Indies. We've already seen the downfall of Saleem Malik through a brilliant catch. And their groundwork has been tremendous. They've not anything let them pass. Close.
Incredible throw then. That was all. That's Imran. Saleem Yusuf game for the second. Isn't there? Again, Asif, he cut off what would have been another run under normal circumstances. Yes. I was about to say that should be two, but he moved so quickly, Lara. Yes. Now they scrambled the single. Shot. Danger. Saleem Yusuf. And Ambrose it is. 5 overs, 2 for 12 his bowling figure so far. 172 for 5. The 36th over coming up. Changed their mind about the second run, and very rightly so. Rightly so. That's good bowling by Ambrose. Past him, but there is a fielder backing him up, which is Richardson. Moved away, you saw. And he'll settle for the single. Imran ran that first one very, very quickly. Well, good over for West Indies, only 4 off the over. Bishop. And again restricted to just a single. Bishop to Saleem Yusuf, and he can't get him away. And now for Pakistan, every run counts, very accurate. But the full toss, and that I think is a missed opportunity. I think the crowd is of the opinion that that's again superb bit of fielding. They're there exactly where they should be. That's Richardson, and that shot would be unorthodox even in the one-day game. Yes, it is, but I'm sure the West Indians... Ambrose has 2 more to go, and now he's coming in to bowl his 7th. It was an attempt at tip and run. That's a single, and they're quite happy to give that single, and I think Imran is quite happy just to take that single. He wants to strike. This is the fun part of the one-day 45. 46 now to Imran. And the excitement of the crowd building up. After this, 2 more overs remain. Four runs. That's a good shot. So, a lot of action,
A lot of excitement. 12 now to Saleem Yusuf and Pakistan 192. In the end, after some anxiety, loss of early wickets, despite a goodish start, Pakistan have come back very strongly. And in the main, Saleem Malik and Imran responsible for it. And they get just one run. How many balls to go in this? That's the end of the over. Good over. Good over for Pakistan. Good 11. Over, but it's not working the way you want it, Asif. Well, it's 11 off the last over. Yes. And 193. So 2 overs to go. Iran 46 and Pakistan 193. 189. Let's get, yes. 189. 189. Right. 2 overs to go. They get one, so 190. And Imran, who's on 46, has the strike. I think all of us here would want Imran to get his 50. It's been a very fine innings. Very fine innings indeed. And what a useful innings too. And I'm sure that will not only please his fans and admirers, but will give him tremendous satisfaction. And Marshall to bowl to Imran. Crowd doesn't like that. What are you? Shot. Shot. The point, 4 runs, 50 to Imran. What a fine way to get to his 50, and what a fine knock. Well played, Imi. Yeah, he looks happy. You can see on his face how pleased and delighted he is with his performance. Imran 50, 5 fours, 1 6 in 50 balls. 50 in 50 balls, that's pretty good going. Excellent performance. That's 100% strike rate. Right, Ben? $194. Could be the last over. The 39th. They take a single. Imran goes to 51. And Pakistan to 195. It's quite evident, Asif, that that's a good shot by Saleem Yusuf. A little bit of fun there from Ambrose. He knew there were 2 runs in it, so he hit the ball. It's difficult to describe that shot, but there's 1 run. And that, I think, is it. So that's the end of the Pakistan innings. Or are they going in for 1 more over? I saw Imran walking off. No, they're going to carry on. The umpires are about to consult. There is Ambrose with his little trick. Oh, that's good. I think that's a good decision, because I honestly think that why should the batting side be penalized? Ambrose. A big groan from the crowd, and that Pakistan want to get every run they can. Bit unlucky, Saleem Yusuf not getting attached to it, because the fine leg had been brought out. Two deliveries without a run being scored. 4 balls to go. But that's a good shot. Excellent shot. That's a 6. That's a 6. That is really how this last over should finish.
This crowd's had everything this morning. Very good bowling, very good fielding, and a superb fight back by Pakistan. There it is. Intelligent cricket. Saleem Yusuf. I think that was very intelligently played. Over it goes. So 204. Brilliant. 208. Saleem Yusuf 26 now. Perfect delivery, perfect Yorker, but intelligently played again. Played it very well. He dug it out and guided it. There was no slip. Saleem Yusuf, 51 to Imran. 208. .25. Very good. And the good thing about the Pakistan innings is, in spite of the fact that they were losing regular wickets, they kept the run rate over 4.5 throughout their innings. The last ball to Imran. That's a single. In fact, they go for the second. And get it. Well done. And that's the end of the Pakistan innings after 40 overs. That's the last run. The last ball, rather. Throw is bowled in and they scramble the second. Imran not out, 53. There he is. Hayat 5. Saleem Malik 58. Imran not out 53. Saleem Yusuf not out 27. Those were the important partnerships. The Saleem Malik Imran, and then in the end, the Imran Saleem Yusuf. So in 40 overs, 211, and the bowling figures: Bishop 2 for 45, Ambrose 2 for 40, and Carl Hooper 1 for 37. So that's the position here at